Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my new class. As we have already discussed about the different type of drugs which are used in the treatment of respiratory disorders. Okay, let's take a start from corticosteroids. So corticosteroids, these are also the agents, the drugs which are used in the treatment of respiratory disorders. Now there are different routes of administration through which corticosteroids can be administered to the patient. The first one is inhalations, oral and spacers. Corticosteroids in the form of inhalation. So the development of inhaled corticosteroids has markedly reduced the need for systemic corticosteroids treatment to achieve the asthma control. As we know that especially the inhaled corticosteroid, it is marked, especially they are used, this is the need for the systemic corticosteroid to treat to achieve the asthma control. Especially the appropriate inhalation technique is critical for the success of therapy. Patient should be instructed to slowly and deeply inhale just before and throughout the activation of MDI meter-dose inhaler to avoid the infection of the medications into the laryngeal mucosa rather than the bronchial smooth muscles. Especially for DPI, dry powder inhaler, patients should be instructed to inhale quickly and deeply to optimize the drug delivery to the lungs. The corticosteroids depositions on the oral and laryngeal mucosa can cause adverse effects such as oro-pharyngeal scandidiasis, hoarseness due to local immune suppressions, and patients should rinse their mouth with water after administrations. Now come toward the oral and systemic corticosteroids. Patients with severe exacerbation of asthma status asthmaticus may require intravenous administration of methyl prednisones or oral prednisones. Once the patient has improved, the dose of drug is gradually reduced and discontinued in 1 to 2 weeks. In most cases, suppression of the HPA axis, hypothalamus, adrenal medulla, adrenal gland, pituitary glands will not occur during the short course of oral prednisones, typically prescribed for in asthma exacerbations. Dose reduction is not necessary, especially in oral and systemic corticosteroids. Spacer is a large volume chamber attached to the meter-dose inhaler. Spacer, look at here, these are spacers, and you can see here the spacer decreases the deposition of the drug in the mouth caused by the improper inhaler technique. The chamber reduces the velocity of the aerosol before entering the mouth, allowing large drug particles to be deposited in the device. The smaller, higher velocity drug particles, so they are less likely to be deposited in the mouth and more likely to reach the airway tissue. So now look at here, these are spacers. The large particles of aerosols, they are deposited in the chamber before the particles inhales. Especially look at these are the particles they're in the form of spray. Inhaled aerosols is enriched in small particle that is moderately travel to the small airway. Spacers minimize the problem of adrenal suppression by reducing the amount of glucocorticoids deposited in the oro-pharynx. Spacer improve delivery of the inhaled glucocorticoids, especially, and their advice for virtually all the patients.
तो एक्चुअली ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं। जिस तरह मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में कहा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है दे आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हम मतलब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा इससे पहले हमने मोंटेलोकॉस के बारे में कहा था, मोंटेलोकॉस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो स्पेशली असल में स्पेसर जो है especially children less than 5 years old and elderly patients who may difficulty coordinating actuations with inhalations. ये जितने भी स्पेसर्स हैं या जितने भी ड्रग्स हैं ये स्पेशली मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं जिस तरह एरोसोल जो है मतलब स्प्रे फॉर्म में, इनहेलेटरी फॉर्म में ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। सो पेशेंट शुड बी कॉन्स्टेंटली अबाउट द रेगुलर वॉशिंग्स एंड रिंजिंग ऑफ स्पेसर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ इंड्यूसिंग एस्मेटिक अटैक एस्माटिक। अच्छा, तो ये भी है कि पेशेंट को हमने प्रॉपर तरीके से उसका मतलब हमने काउंसलिंग करना है कि किस तरीके से रेगुलरली आपने स्पेसेस को आपने वॉश करना है, ठीक है, ताकि उसमें कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस जो है, रिस्क ऑफ बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ जो है, ताकि उसमें कंटामिनेशन के चांसेस कम हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो, ठीक है, एंड स्पेशली टू इंड्यूसिंग एस्थमा अटैक। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स है which are reported after administration of corticosteroids. Let's suppose oral or parenteral glucocorticoids have the variety of potentially serious side effects. ICS, if used with the spacers, have few systemic effects. Effect of inhaled corticosteroids, especially on bone growth in children, is negligible. तो मतलब कभी कभार ये जितने भी corticosteroids हम यूज़ करते हैं तो ये corticosteroid जो है ओरल फॉर्म में भी है, पेरेंटल फॉर्म में भी है, ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं। उसके कुछ पोटेंशियल सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एडवर्स इफेक्ट जो है ये हमेशा ओवरडोजिंग की वजह से होता है, और स्पेशली ओवरडोजिंग जो है लेट्स सपोज whenever let's say these are the unknowns and obnoxious effect of the drug, effect of the, और इसके अलावा स्पेशली जो बच्चे हैं उसमें उनके बोन ग्रोथ जो है, ठीक है, उसको भी वो इफेक्ट कर सकता है। सो द रिटार्डेशन ऑफ द वर्टिकल बोन ग्रोथ सेकेंडरी टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अनकंट्रोल्ड एस्थमा कैन अकर इन मोर सीवियर केसेस। Now let's come toward the alternative drugs used to treat asthma, that is leukotriene receptor blockers or leukotriene antagonist, chromoline cholinergic antagonist, thiopyline, omalizumab. So all these are the agents, alternative drug which are used in the treatment of asthma. Now let's talk about the leukotriene antagonist. So leukotrienes are the products of the 5 lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolisms and part of the inflammatory cascades. Leukotriene receptor blockers, so they are also used in the treatment of asthma whenever there is bronchoconstrictions. So at the level of lungs, these leukotrienes, so they're responsible. These are actually the products of the 5 lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolisms and a part of the inflammatory cascade. 5 lipoxygenase, it is found in the cells of myeloid origin such as mast cells, basophils, eosinophils and neutrophils. Leukotriene receptor blocker, before it is a potent chemo attractant for neutrophil and eosinophils, while cysteine leukotrienes, leukotriene C4, leukotriene D4 and E4, it can contract the bronchial or smooth muscles and increase the endothelial permeability and promote the mucus secretions. These are the different agents of leukotriene antagonist, that is called Montelukast, Singularis Montelukast, that is available in a market by trade name
मोन्टीका 100 मोन्टीका के नाम पे हैं 4 मिलीग्राम्स में। इसके अलावा जिलोटॉन्स है और इसके अलावा ज़िफिरलोकास्ट है। तो ये सारे जो हैं दीज आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एंटागोनिस्ट। As we know that zilotons is a selective and specific inhibitor of 5-lipoxygenase in preventing the formation of both leukotriene receptor blockers before and cysteine leukotrienes. Zifirlocast and montelocast, these are selective and reversibly, these are actually the inhibitors of cysteine leukotriene 1 receptor, so they can block the effect of cysteine leukotrienes. Montelocast, the clinical indications, clinically these drugs are used especially in children 6 months of age and older. They are available in chewable tablet as well as in granule formulations. Leukotriene receptor blockers or leukotriene antagonists, they are approved for prophylaxis of asthma, treatment before the entry of microorganisms, treatment before the entry of this attack, but they are not effective in situation in which immediately bronchodilation is required. The therapeutic benefits, they are modest reductions in the doses of beta-2 adrenergic agonist and corticosteroids, which can improve the respiratory function. Montelocast is approved for the prevention of exercise-induced bronchospasms. Elevation and serum hepatic enzymes required periodic monitoring and discontinuation when enzyme exceeded 3 to 5 times the upper limit of the normals. Although especially in rare cases the eosinophilic vasculitis, Churg-Strauss syndrome has been reported with all agents, particularly when the dose of concurrent corticosteroid is reduced. स्पेशली जिस तरह मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में कहा कि इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब साइड इफ़ेक्ट्स CDR जो है वो रिपोर्टेड है, हेडेक है, डिस्पेप्सिया है, इंडाइजेशन है। इसके अलावा ज़िफिरलोकास्ट एंड zilotons, these are the inhibitor of cytochrome P450 system. तो मतलब ये cytochrome P450 system जो है उनके inhibitors भी हैं and they can increase the serum level of the warfarin. और इसके अलावा ये warfarin जो है जिसको हम anticoagulant कहा जाता है, तो ये असल में serum level को क्या करता है, उसको बढ़ाता है। Chromoline, it is another agent. So chromoline is an effective prophylactic anti-inflammatory agent. It can inhibit the mast cell degranulation and release of histamine. Chromoline, it is not useful in managing an acute asthmatic because it is not a direct bronchodilator agent. Chromoline जो है इसको हम मतलब जो acute asthmatic attack है उसमें हम ज़्यादातर मतलब हम कोशिश करके इसमें हम यूज़ नहीं करते, कोई और एजेंट्स हम यूज़ करते। इसमें ये है प्रॉब्लम ये कि ये डायरेक्ट जो है डायरेक्टली ये ब्रोंकोडाइलेटेशन नहीं करता, ठीक है। जिस तरह हम और भी हमारे पास जो ब्रोंकोडाइलेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, तो सल्ब्यूटामोल, तो मतलब क्रोमोलिन जो है, अच्छा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, क्रोमोलिन इट कैन ब्लॉक द इनिशिएशन ऑफ एमईजीएट एंड डिलेड हिस्टैमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो क्रोमोलिन क्या करता है, स्पेशली ये ब्लॉक करता है स्पेशली जो अस्थमेटिक रिएक्शन है, एंटीजेनिक बॉडी रिएक्शन, क्योंकि एस्थमा में यही होता है कि स्पेशली difficulty in breathing due to inadequate supply of oxygen in blood. Chromolines, they are available as a nebulized solution form में भी ये available है। As we know that chromoline, so it is poorly absorbed, only minor adverse effects are associated, उसके कुछ ऐसे adverse effects भी उन्होंने reported किया कि pre-treatment with chromoline blocks allergens and exercise induced bronchoconstrictions. So it is given its efficacy, its initial trial of chromoline is often recommended, particularly in children and pregnant women. So it is short duration of action, और इसका जो duration of action है बहुत short है, required frequent daily dosing इसके लिए required होता है, which is being shown to affect the adherence and therapeutic efficacy, ठीक है। अच्छा, it shouldn't replace the inhaled corticosteroids or quick release beta-2 agonist
is that of mainstay of asthma therapy. अच्छा, तो हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पे है कि और थियोपाइलिन पे कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है दे आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माय लेक्चर so you can directly contact me through my email, so rphzorislam@gmail.com. Thank you.